हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। ईएलएम लाइव के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। एंड मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रियाँ चल रही है, आप देख रहे हैं मैं नवरात्रि की ड्रेस में हूँ क्योंकि कलकत्ता में हूँ और दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों बता दूँ, दुर्गा पूजा को इस साल यूनेस्को के जो गिने चुने फेस्टिवल्स को वो लिस्ट करते हैं, उसमें से दुर्गा पूजा भी लिस्ट की गई है। ये हम सब लोगों के लिए जो बंगाल में एक बहुत गर्व की बात है और इसे आज से हम मनाना चालू करते हैं। आज शुभ पंचमी है, तो आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं नवरात्रि की। और इसके साथ हम आरंभ करेंगे आज के ईएलएम लाइव का, जो कि एक आगाज है जो हम करने जा रहे हैं टेक्नो फंडा समिट, जिसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर रहे हैं यहाँ वहाँ। और आप देख ही रहे होंगे, हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, तो हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंताएं लिए मन में बैठे होंगे, कुछ ना कुछ सवाल होंगे हमारे मन में। तो वो सवालों के जवाब कुछ कुछ आज की इस चर्चा से सामने आएंगे, क्योंकि ये जो चर्चा है, ये जो शो है आज का, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि इसमें जो गेस्ट्स आने वाले हैं, ये सब अपनी अपनी एरिया में एक्सपर्ट कहना भी कम होगा। मैं तो कहूँगा ये अपनी अपनी एरिया में बहुत ही बड़े दिग्गज हैं और मैं कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इसमें से जो 4 गेस्ट आने वाले हैं, उन चारों के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अलग है। और कोई मेरा मेंटर है जिसे मैं मेंटर कहता हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है। और मिस्टर सो मैं ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूँगा, मैं आपको उनसे और दूर नहीं रखूँगा। तो सबसे पहले स्क्रीन पे मैं अपने चारों गेस्ट्स को इनवाइट करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं कह दूं कि आज का ये जो सेशन है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ऊपर होने वाला है दोस्तों। हम यहाँ पे आज या कल या परसों मार्केट में क्या होगा इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बट शेयर बाजार से बहुत 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 सारा वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाए, ये हम कोशिश करेंगे कि इन दिग्गजों के ब्रेन्स को पिक कर सकें और इनसे कुछ सीख सकें आज। तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे सवाल पूछने की जिससे मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा निकलवा पाऊं। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पे एक एक करके ऐड करता जाऊंगा। और सबसे पहले मेरे साथ हैं निखिल गांगिल, फिर करण शर्मा, श्री थोविटी ब्रह्मचारी और अंत में मिस्टर अजय शर्मा। हेलो सर, वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे विनीत, गुड टू सी यू। गुड टू सी मेरे यू टू सिंगापुर में सर। रात के 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बज रहे हैं, हमारे यहाँ 7 बज रहे हैं, तो आप 2.5 घंटा हमसे आगे चल रहे हैं। और आपके पीछे की, आपका बैकग्राउंड भी बहुत जबरदस्त है सर, रफ्तार दिखाता एक्चुअली हुआ। पेंटिंग वो मैंने बनाई है। अच्छा, पेंटिंग है? बहुत ही लाजवाब पेंटिंग कुछ करते हैं सर, ये प्रकार की आपका ये पेंटिंग। हुनर तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, बहुत कुछ पता चलेगा धीरे धीरे मेरे बाद। दोस्तों मैं बता दूं, मैं अजय भैया भैया बोलता हूँ। ये हमारे मेंटर हैं और आप जितना इन्हें जानेंगे परतें खुलती जाएगी। एनालॉजी पता नहीं सही है गलत, बट प्याज की तरह परतें खुलती जाएगी। बहुत बहुत डेप्थ है दोस्तों। और ये अब अवेलेबल है यूट्यूब पे भी। अजय फाई बोल के इनका चैनल है, आप सुने। जीवन का जो ज्ञान आपको वहां मिलेगा, शायद ही कहीं मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा भैया पीछे जाऊंगा और मेरे बाकी गेस्ट जो मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं एक एक करके उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो मैं सबसे पहले चर्चा आरंभ करूंगा। तो मेरे साथ हैं करण शर्मा, निखिल गांगिल और श्री थोविटी ब्रह्मचारी। ये सभी सोशल मीडिया में भी चर्चित हैं, लोग इन्हें जानते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, इनसे सीखते हैं। अजय भैया अभी तक सोशल मीडिया में थोड़े से आई थिंक दूर थे, लेकिन अब वो आ गए हैं और हम सबको सोशल मीडिया में उनका भी ज्ञान मिलेगा आने वाले समय में। तो एक एक करके मैं आरंभ करूंगा, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा। मैं सबसे पहले निखिल से स्टार्ट करूंगा, तो मैं एक बार बाकी लोगों को स्टेज से आई जस्ट रिमूव देम और फिर एक एक करके लाऊंगा। तो निखिल से चालू करते हैं। निखिल, सबसे पहले हम आपसे आरंभ करते हैं। निखिल,
बहुत से लोग आपको जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। आप क्या करते हैं और मार्केट में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, इन्वेस्टिंग जर्नी को। निखिल, निखिल आप म्यूट पे हैं, आप अपने। Hi, now you can hear me, I think. एकदम आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है तो निखिल, वी कैन मैं हियर यू। सिंपल प्लेन वनीला वैल्यू इन्वेस्टर हूँ बेसिकली। एंड जो कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है जो 60 साल से चला आ रहा है, मैं वही कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक 10 years बैक when I was in my first year of my MTech. I did my MTech in IIT Madras. I am basically an engineer, civil engineer to be exact. एंड जो पहला स्टाइपेंड आया 10,000 रुपये का, उसी से मैंने 6,000 रुपये लगाने के बाद अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू करी। एंड आई वॉज वैल्यू इन्वेस्टर फ्रॉम द डे वन। बट बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं एज अ वैल्यू इन्वेस्टर। समटाइम्स यू थिंक कि बाइंग चीप इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो टाइम के साथ वो सब क्लियर होता चला गया एंड क्वालिटी पर फोकस बढ़ता चला गया एंड उसका असर रिटर्न्स पर दिखना चालू हुआ। तो एंड फॉर लास्ट 4-5 years वी हैव डन प्रीटी वेल एंड उसका असर रिटर्न्स पर भी दिखता है। सो दैट्स ऑल। आई कम फ्रॉम a small town in MP near Gwalior, that is Gohad, and right now we are based in Mumbai. ये तो है, देखिए जो लास्ट बात आपने बताई कि आप एमपी के एक छोटे से शहर से आते हैं। शेयर बाजार एक बहुत ही बड़ा या इन्वेस्टिंग एज अ होल एक बहुत ही बड़ा आई थिंक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है हम सबके लिए। अब हम कहीं पे भी हों, इंटरनेट है हमारे पास, तो हम कहीं भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, और आप एक उसका अच्छा उदाहरण है। निखिल, आप ये बताएं कि आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग को ही क्यों चुना। आपने बाकी भी अध्ययन किया होगा, व्हाई डिड यू पिक अप वैल्यू इन्वेस्टिंग? बिकॉज ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नो मोर रेलिवेंट। और ऐसा क्यों मानते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई कई लोगों से मेरी चर्चा होती है और वो कहते हैं कि ये जो ये जो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म, ये अपने आप में थोड़ा सा डाइसी है कि लॉन्ग टर्म क्या होता है। और पहले जो कंपनीज बनती थी वो शायद 100 साल तक चलती थी। अब जो कंपनीज बनती हैं वो शायद 10-15 साल के अंदर बहुत बड़ी बनती हैं और शायद बहुत जल्दी खो भी जाती है। ठीक है, बहुत सी आपने पिछले 10 साल में कंपनियां देखी होंगी जो स्टार्ट हुई बंद भी हो गई, और बहुत सी जो 10 साल में खुली और आज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर उनका मार्केट कैप है। तो आपको क्या लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टिल वर्क्स? तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग ही क्यों चुना फ्रॉम द डे वन। आई हैड वेरी लिटिल मनी एंड माई गोल वॉज लॉन्ग टर्म, लाइक 20 years 30 years मुझे यही करना है। सो माई गोल वॉज कि टू लर्न, मुझे सीखना है और फिर करना है। अगर सीखना है तो फंडामेंटल्स में ही करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल्स देख के ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। सो आई बिकेम वैल्यू इन्वेस्टर फ्रॉम द डे वन। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए। जब 2016-17 में लोगों के स्टॉक्स डबल हो रहे थे, ट्रिपल हो रहे थे टेक्निकल इन्वेस्टर्स के, तो आई ऑल्सो वेंट इन टू दैट। बट मेरा तो अच्छा खासा लॉस हुआ उसमें। RSI, MACD, एवरेजेस एंड ऑल दैट मैंने बहुत सारा अप्लाई किया। मैंने बहुत जानने की भी कोशिश की, सीखने की कोशिश की, बट मेरा नहीं चला। बिकॉज आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेंटेलिटी एंड आई लाइक बाइंग लो सेलिंग हाई। दूसरा क्वेश्चन आपने बोला लॉन्ग टर्म, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज हो गई है। पहले लॉन्ग टर्म को शायद 20-25 साल बोलते होंगे, अभी तो 7-8 साल 10 साल। और लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब तक फाइनेंशियल्स आर गुड यू कीप होल्डिंग द कंपनी एंड यू बाय द कंपनी एट द वेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट वेरी अंडर वैल्यूड प्राइस। So basically for me long term is that. So that may vary from 3 years to 6 years to 7 years to 8 years. So ओके ओके। that's not forever. And तो value investing is definitely not dead. It will keep coming back. And I think we have seen that in 2021, 22 and 22 also we will see the exact same thing when the growth stocks are not doing very well. And there is no momentum because stagnant is there. सही है। सो निखिल, वील ऑल्सो कीप कमिंग बैक टू यू।
और हम थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल करण को स्क्रीन पे लेके आता हूँ और करण से समझते हैं। इस बार मेरा सवाल थोड़ा सा अलग होगा करण से। सो हाय करण, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें क्विकली। Hello, Vineet. Yeah. This is Karan. And इंट्रोडक्शन में आई वाज वन ऑफ योर अर्लीस्ट स्टूडेंट, तो आपको याद होगा पहले जब क्रेडिट कार्ड हुआ करता था तो 2009 में मैंने ज्वाइन किया था। एंड क्रेडिट में मैंने मार्केट सीखा एंड वर्क करते हुए आई डिड CFA इन 2012, तो 2014 ही गॉट माय चार्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट अराउंड 2009 से मार्केट में हूँ और अलग अलग फील्ड में काम किया है। शुरू में पहले 2 साल रिसर्च में थे, फिर 3 साल ट्रेडिंग की 2011 से लेकर 2013 एंड तक। एंड पोस्ट 2013 एंड 14 जब CFA चार्टर मिल गया, उसके बाद आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन इन्वेस्टमेंट्स विद क्रेडिट। सो मैं उनका फैमिली ऑफिस मैनेज करता हूँ एंड दैट इज हाउ इट इज। सो करण, मैं याद दिला दूं, तुम्हारा वनवास खत्म होने वाला है, 14 साल होने वाले हैं। 2009 से तुम मार्केट में हो। और दोस्तों मैं बता दूं, करण के साथ मैं क्लोजली बहुत क्लोजली लिंक्ड हूँ, एसोसिएटेड हूँ। करण क्रेडेंट की फैमिली ऑफिस का वेल्थ मैनेज करते हैं और करण के रिसर्च में जो डेप्थ है वो लाजवाब है। तो करण, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल रखूंगा कि विल गो टॉप डाउन। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस टॉप डाउन किया जा सकता है। हम एक बहुत मैक्रो व्यू लें, वर्ल्ड व्यू, फिर कंट्री व्यू, एंड देन वी कम टू सेक्टर एंड स्टॉक, और वी कैन गो बॉटम अप। विथ यू आई वुड लाइक टू टेक अ टॉप डाउन अप्रोच। और मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, एक 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 है ना, बहुत नेगेटिविटी है अभी अराउंड द मैक्रो इन्वायरमेंट। पूरी दुनिया में जो चल रहा है, इन्फ्लेशन इज एट ऑल टाइम हाई इन US, UK, राइट? एंड there is war going on, so there is so much of disturbance all around, and we are seeing that there is no growth in most of the economies. So first of all, what do you think? आपको क्या लगता है? What do you think about the macro scenario, and how is that impacting India? Is it same, or are we a little differently impacted from the macroeconomic scenario? So first lay out the macroeconomic scenario in your words, and then how is India impacted? इवन तो मेरी नॉलेज इतनी डेप्थ में नहीं है मैक्रो के लिए, बट आई ट्राई टू टेल जितना मेरे को पता है फ्रॉम अ मैक्रो व्यू पॉइंट। जितना आपने कहा है चीज़ें, एवरीबडी नोज दैट इट इज़ नेगेटिव एज ऑफ नाउ। इन्फ्लेशन US से लेके आप डेवलप्ड इकोनॉमी से लेके छोटी इकोनॉमीज देख लो, रिसेशन की बातें हो रही है, वॉर है, तो जितनी चीज़ें गलत हो सकती है सारी की सारी चीज़ें गलत है। 3-4 महीना पहले तो क्रूड के प्राइसेस भी बहुत हाई थे, सारी कमोडिटीज ऑलमोस्ट ओवरशूट कर रही थी, तो पॉजिटिविटी कहीं नहीं है। बट आप इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। जैसे कि मैक्रो सबके लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस ओनर है, उसको मैक्रो एक अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा। आप अगर एक स्टॉक ट्रेडर हो तो आपको मैक्रो एक अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मैक्रो आपको एक अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो पहले ये समझना चाहिए कि मैं किधर हूँ। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे लिए मैक्रो कहाँ स्टैंड करता है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से एज एन इन्वेस्टर मैं हमेशा मैक्रो को प्राइसेस के साथ रख के देखता हूँ। तो मेरे अराउंड में जहाँ भी देखता हूँ नेगेटिविटी है, रिसेशन की बातें चल रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, वॉर हो रहा है। क्या ये चीज़ें पहले हुई थी? हाँ, ये चीज़ें पहले हुई थी। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लिव थ्रू ऑल ऑफ दिस। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 30 साल का 40 साल का इन्वेस्टमेंट करियर रखूँगा, तो मेरे को पता है कि ऐसी चीज़ें आएंगी। अब उसी पर्सपेक्टिव में जब मैं प्राइजेस को रख के देखता हूँ, प्राइजेस इन द सेंस कि US में अगर इन्फ्लेशन ओवरशूट कर रहा है या इंटरेस्ट रेट्स बहुत जल्दी बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहाँ के मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट है। इंडिया में अगर ग्रोथ कंसर्न्स आने वाले हैं, तो यहाँ के मार्केट में उसका ऑलरेडी क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि जब आप एक मार्केट पार्टिसिपेंट हो, तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि मार्केट उसको कितना लेवल पे डिस्काउंट कर चुका है। तो मैक्रो इज़ वेरी नेगेटिव, बट एज अ पार्टिसिपेंट मैं ये भी देखना चाहूँगा कि वो कितना मार्केट के प्राइसेस में ऑलरेडी है। US इक्विटीज़ में, इक्विटीज़ के अंदर भी वो किस सेक्टर को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप बोलते हैं, जैसे US मार्केट देख ले, तो S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक तीनों 20% प्लस डाउन है। बट उसी इंडेक्स, उसी मार्केट में आज भी कुछ स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। इंडिया में अगर आप देख लो तो लास्ट 1 साल में इंडेक्स में कोई रिटर्न नहीं है। निफ्टी हैज़ नॉट मेड एनी रिटर्न फॉर द लास्ट 15 मंथ। बट इंडियन मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं
जो कि अपने ऑल टाइम हाइस पे हैं, और कुछ सेक्टर्स है जो 40-50% डाउन है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना चाहिए कि इन सारी सिचुएशन के अंदर मार्केट आपको क्या बता रहा है, रादर देन इन सारी सिचुएशंस में आप मार्केट में क्या डिसीजन लेना चाहते हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि हर जगह प्रॉब्लम है, लेट्स गेट आउट ऑफ द मार्केट, इंस्टेड ऑफ दैट लुक व्हाट इज अराउंड यू एंड व्हाट मार्केट इज टेलिंग यू। तो किस सेक्टर्स में खराब हो रहा है, कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। जैसे बहुत क्लैरिटी दिख रही है कि यूएस में टेक बहुत खराब कर, और ग्लोबली ये क्लैरिटी दिख रही है कि जो एंटी ईएसजी थीम है, 10-12 साल से जिन सेक्टर्स में पैसा नहीं है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैक्रो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ो, बट उसको पढ़ने के बाद आप ये देखो कि उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में कितना आ चुका है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो हमारा काम वही है, टॉप डाउन इज वेरी नेसेसरी, हम पढ़ते हैं, बट बॉटम अप काम बॉटम एकदम दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा करण। और मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे अब एक सवाल पूछने वाला हूँ। एक सेक्टर जिसपे आप बहुत बुलिश हो, वो सेक्टर बताओ कौन सा है, कि हम कुछ साथ लेके जा पाए कि करण ने आज बताया कि भैया ये सेक्टर देखो। एक जो थीम दिख रही है होती हुई, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खोजा है, एनर्जी और एनर्जी रिलेटेड। लास्ट 1-1.5 साल में एक रियलाइजेशन हुई है कि 12-15 साल से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं, पैसे का फ्लो है, ये मूव करता है। तो कोल, जो भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, उससे जो एनर्जी आती है, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट 15 साल से हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ ईएसजी। अब सब कंट्रीज वर्ल्ड ओवर में एक रियलाइजेशन हो गई है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है हमें। तो हम रशिया पे रिलाई नहीं कर सकते, हम मिडिल ईस्ट पे रिलाई नहीं कर सकते, हम यूएस बोलता है यूरोप पे रिलाई नहीं कर सकते, इंडिया को अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आई थिंक दिस विल इमर्ज एज द नेक्स्ट बिग थिंग। सो पावर, ऑयल, गैस, इससे रिलेटेड जितने सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या, एक जो मैंने सेक्टर खोजा उसमें ये चीज़ है कि पैसा इस सेक्टर में आने वाला है। मैं ये देख रहा हूँ कि कोल कहीं नहीं जाने वाला, तो ऐसे बिजनेसेस खोजो जो कि कोल से जो एनर्जी बन रही है उसको थोड़ा एफिशिएंट कर दे। सो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अगर टरबाइन बनाती है, अगर कोई कंपनी गैस डीसल्फराइजेशन का काम करती है, जो कि एफिशिएंट करते हैं इन बिजनेसेस को, बिकॉज इधर बहुत पैसा, बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो एनीथिंग दैट इज पावर, ऑयल और गैस रिलेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंसिलरी एयर इक्विपमेंट मेकर्स, आई थिंक वहाँ पे किसी को ध्यान देना चाहिए। This is very refreshing and contrarian, I think, Karan, because everyone is talking renewable energy, ESG as a theme, right? And trying to identify companies which are in those areas, and EV, everything which is related to non-coal, non-petrol, non-fossil fuel energy. And here you are saying a little different, which seems very very refreshing. और इस पे और वापस चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक बार के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर ब्रह्मचारी को स्क्रीन पे। हेलो सर, वेलकम। Hi. Good evening, Vineet. Good evening, good evening. So it's so good to talk to you always, because you have this immense knowledge, right? And which is backed by data, which is backed by facts. Sir, English or a little bit of Hindi will also do. दोनों मिलके करो. Arey, wow, wonderful, wonderful. All right. So I'll go a little. But don't feel bad about my Hindi, please. Definitely not, sir. तो बुरा So माइंड लाना नहीं बनना बस. एकदम आप you talk in the language you are comfortable, and add little bit of Hindi, because that acts as a Yes, yes, I'll try masala to on my the level. chart. So my question is, we talked about world as the economy with Karan, right? I want to come to India, right? And everyone is saying that India is different us, and I feel very proud as an Indian that we are not going down the train like everyone else. Everyone else is going down the train. We are saved because from last 7-8 years there has been enormous amount of structural changes in the country. All right, sir, I want to understand your thoughts on what's happening in India, and shall we be bullish on India, and for how long? Yeah. See, there are two things about economy. What I wanted to say, because I'm watching this economic reforms process from 91 onwards. Because as a financial journalist, I started my career in 91
when the Manmohan Singh presented his first budget, right? So since then, what happens is we are no more insulated from the world economy. So we are part of, we are integrated, our economy is integrated with the all world economy, global economy. I think everyone accepts this fact, right? So we are now no more limited to our own country consumption now. We are exporting several goods and services to various countries. At the same time, our major import burden is coming from the gold and oil, right? If you remove these two, our economy is really good. There is no doubt about that, and there is no hesitation about saying our economy is very strong. The outperformance recent times of, if you take any global indices or global markets, our index has outperformed than anyone else. If you see, Dow Jones or S&P was fell by about 16% in the 16, more than 16%. I think yesterday's fall is little more. So they fell more than 15%. Dow and S&P. Nasdaq has fell more than 20%, right? But our major benchmark indices outperformed given 1% return. Maybe it is flat, but 1% return year on year. So this outperformance is making many people bullish. Yeah. So that is one area. Second thing is when the quantitative easing is over, now the quantitative tightening is happening now world over, even including the India. Even yesterday, why the bounce has come is because the market is expecting, like any other country, we may raise 75 basis points, but the RBI has taken decision to 50 basis points, which is lesser than expected, right? So that might have taken positively by the market participants. So that's the reason yesterday there was a huge bounce. So that bounce has to sustain over a period of time, at least another next 2-3 days. Then we will say yes, our economy is really good and good. There is another factors like now the dollar price, rupee D is now almost. I said I think when we interacted with Vivek last time, I said 84 is the target for my target for the dollar. I Yes, now remember we that. we almost there now, right? At the same time, even the DXY dollar index is almost a 20-year high now. It is almost 113, 114 levels, which is trading. So these two have a inverse relationship with the risk assets like equities. So when the dollar index is rising, generally the equities will fall. This is the correlation between the dollar and the rupee. At the same, if when we are importing the oil and gold, basically these are the two major components of our imports. Automatically, we need to shell out more money. So that may widen the major gap between the exports and imports. That is called as a balance of payments, right? So these are the things to be considered when we are going to be very bullish on the markets. And the second thing is the capex plans. If you compare with the capex plans when before COVID level or little around 2014 to 2016 level, then the capex expenditure is very, very high. Capex plans are very high, and the loan disbursal also gone very well. Now, what happened is for the past 2 years since the COVID now 2022 now 22 these last two and a half years, then there is no major capex has happened in the industry. At the same time, the capacity utilization is less than 60% now. Whatever the capacity we have across the industries, we have less than what we have done earlier. It is about 74 to 80% in the 2012 to 2015 times. So if you compare that capex and the capacity utilization, these are the low factors. Yes, I accept now we are trading little reasonable earnings ratio, like price earning ratio about 22, 21 levels. So that may not be looks cheaper now. Actually, it's not a cheaper one. It is reasonably little. We can say not over valued or not so reasonably valued. Still, there is some room for correction in that valuations also. And at the So same sorry, time, I'm cutting you in between. Sorry. So I would also want, like you are saying, that it's reasonably valued, not very attractively valued, neither very expensive at this point of time. yes. Do you think because of this sector rotation, there is any particular sector
which is right now in your mind, and you are tracking it, and you are bullish on a particular sector at this point of time? Yes, I'm very bullish on defense stocks. Sorry. Bullish on the defense sector stocks like Okay. HAL, BDL, BEL, Mazda, Gordon Reach, and even the Cochin Shipyard recently yesterday it was broken out of a very long 65-week consolidation. So Sure. defense stocks are looks very attractive now. Though some of the major indices like IT looks oversold, but even the pharma also looks little bouncing is happening, but it's still at the resistance, not at very convincing level now. These two Sure. defense sector may be watched for now, but not an entry levels. At the same time, it is not about the shorting levels also. Yeah. So they may look for some more consolidation in these two sectors. Why I'm saying is that when the market or major benchmark indices for the sectors or the benchmark indices declines about 20 to 25%, then automatically it goes for some consolidation for almost 6 to 7, 8 weeks sometimes. This consolidation range will not give you any very strong bullish scenarios, but it is not a selling areas also. So let Sure. us wait for that. Generally, in any It's wait cycle, and watch, basically. I yeah, think for some time the markets are in a way where you are saying it's wait and watch. So, sir, yes, we will, so in our Techno-Funda Summit, which is happening on 16th and 17th, you will be discussing about CAN-SLIM strategy. And yes, I have some questions related to that also. But please before go that, ahead. yeah, no, before that, I'll just I'll give you a small break, 5 minutes. I'll come back to you. Before that, let me call Ajay and Yeah, please. introduce him. Thank you. So, hello, welcome once again. So, I have for you. I want to repeat this question, and I want your thoughts on this. So, first of all, I want you to introduce yourself briefly. Your introduction can run into half an hour, but you have to keep it brief, right? Keep it brief. And since you are outside India, right, and mostly you have been tracking the whole world, and you are so well traveled, I want to understand your perspective on how the world is looking at India today. Is India going to be, the next big or the biggest economy? What do you think about India? And shall we be bullish for next 20, 30 years? Shall we become very long-term investors? I want all of those questions to be answered. Over to you. कितना टाइम है मेरे पास? आपके पास मैंने उनको 5 मिनट बोला. I can stretch it to 7-8 minutes, but that's 7 all. मिनट में तुम कह रहे हो कि पूरी रामायण सुना दूंगा, महाभारत भी सुना दूं. Anyway, अच्छा, आप कोशिश अपना करता हूं. इंट्रो दे दो और इंडिया बता दो बस. इंडिया क्या Okay. लगता है? मेरा इंट्रो है कि IIT वाराणसी से 98 पास आउट हुआ. आई एम अहमदाबाद. Spent 22 years in the markets. Morgan Stanley, I was head of CLSA healthcare research. Then started my own hedge fund. Then did some startups, and I went into what I called an agyatwas in COVID. Hopefully, I know what I want to do the next 20 years in my life. Okay. Now, to answer your question कि इंडिया पे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, my next innings is going to be only about India. Okay. So if I am having seen the world, 30 countries invested all across Asia, Japan, China, Vietnam and all, I think the next 20, 30 years is India. So my next chapter of life is completely focused only on India. So I hope that answers your question in terms of अगर मैं देश पे पूरा अपने आप को न्योछावर करने तैयार हूँ, ऐसे जैसे कभी लोग बोलते हैं, तो वो एक है. Quickly, see, I don't understand macro at all. I'll be very frank. मेरे को ये इंटरेस्ट रेट, डॉलर वॉलर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है. ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता. मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा आई डोंट नो. What I understand is, as long as you have a country of 130, 140 crore people who are young, who are hungry, जो entrepreneur हैं, जो businessmen हैं, ठीक है, वो देश बहुत अच्छा करेगा. ठीक है. बट सर, ये फैक्टर्स तो पहले भी थे, आज से 10 साल पहले भी तो इसलिए देश खराब किया है क्या? तू बता ना. नहीं, Let's look देश at में India. बहुत. मैंने जब से अपना करियर शुरू किया है ना, watch. So what have I seen in my
years since I went to IIT. Let's look at it. VP सिंह, मंडल कमीशन, वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार, न्यूक्लियर बॉम्ब, सैंक्शन, वाजपेयी जी की 5 साल की सरकार, नरसिम्हा राव, बाबरी मस्जिद, करेंसी क्राइसिस, देन कांग्रेस सरकार, चिदम्बरम, देन मोदी एंड all the ups and downs, tech crisis, India is still compounded between 8 and 12% dollar returns 25-30 years. So जो फैक्टर्स कल थे आज भी वही हैं, नथिंग इज चेंज्ड. ठीक है, तो थिंग्स डोंट चेंज, यू नो, इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है. एक फर्क है इंडिया में कि पहले क्या था कि आपको इंडिया की फेरारीज जो थी ना, वो रिक्शे के भाव में मिलती थी. अब सब कुछ फेरारी के भाव में मिलता है या डायमंड फेरारी के भाव में मिलता है, यही फर्क है. पहले इंडिया में इन्वेस्टिंग बहुत आसान थी, कि बहुत अच्छी चीज़ें बहुत सस्ते में मिलती थी, आपको मर्सिडीज टोयोटा के दाम में मिलती थी, अब नहीं मिलती. यही फ़र्क है इंडिया में. सो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन देश में बहुत तेज़ी है, बहुत तेज़ी है. मैं ये ऑब्वियसली मैं ये 12 महीने 18 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ. महंगाई है, महंगाई से फ़र्क पड़ता है, बट आई एम प्रीटी कंस्ट्रक्टिव अबाउट इंडिया, एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव. Awesome, sir. So I can see your optimism, and that's very contagious. In fact, whenever we talk to you, you are extremely positive, bullish about India, about the future, and So I'll go a little specific now, specifically for my audience, so that they get something very, very concrete. So Yes. what I want, share some recipe to pick multi-bagger stocks for long-term investing. So and try to do it in a way that I can write it down 4-5 points, and I have takeaway. अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ. क्योंकि हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं और मैंने चूंकि आपको फेरारी दिखाई है पीछे, देखो मल्टी बैगर की रेसिपी बहुत सिंपल होती है, कोर में बहुत आसान होती है, और एक कहानी से समझा देता हूँ. अगर आपको फेरारी जैसी कंपनियां, जो पीछे लाल रंग की फेरारी है, वैसी कंपनियां, पहली चीज इसके भाव में मिले, दूसरी चीज, तीसरी चीज है कि आपके पास इनफ समय है. समझ गए? तो ये 3 चीज की आप फोटोग्राफ ले लीजिए. फेरारी मतलब हाई क्वालिटी, अगर रिक्शे के दाम में मिल जाए तो वहाँ नथिंग लाइक इट. लेकिन तीसरी चीज है कि आपको उसको समय देना पड़ेगा फेरारी बनने के लिए. ठीक है, अब इसमें 2 चीज है, आप समझ लो. एक है जो चीज आज ऑलरेडी हाई क्वालिटी है, फेरारी है, वो आपको रिक्शे के दाम में मिल रही है. ठीक है, मेरी इन्वेस्टिंग स्टाइल ये होती है कि मेरे को सिर्फ मर्सिडीज चाहिए, टोयोटा का दाम मिलना बहुत अच्छा है, लेकिन मर्सिडीज का भाव दे दूंगा, और मेरे पास समय बहुत होना चाहिए. ओवरनाइट कोई अरबपति नहीं बनता, मल्टी बैगर ओवरनाइट नहीं होते हैं, समय देना पड़ेगा. दूसरा बड़ा पैसा कब मिलता है? जो आज का रिक्शा है, रिक्शा ही है, और वो फेरारी बन जाएगा. ऐसी इन्वेस्टिंग मुझे नहीं आती है, मैं बता दे रहा हूँ. ऐसी इन्वेस्टिंग टिपिकली वो कंपनियां होती है जो डोरमैट जैसी होती हैं, पाँव पोछना होता है ना हमारे घर में, उसकी जैसी होती है. हमें लगता है कि वो कभी पर्सियन कालीन बन जाएगा. कुछ कंपनियां बन जाती हैं. टिपिकली ये क्या कंपनियां होती हैं? सिक्लिकल होती हैं, चोरों की होती हैं, हाईली लेवरेज्ड होती हैं, बहुत डेट होता है वगैरह वगैरह. लेकिन कभी ना कभी इनकी जिंदगी में चांदनी आती है, लेवरेज कम हो जाता है, कमोडिटी साइकिल आता है, बहुत पैसे बनते हैं. उस ढंग से भी पैसा बनता है, वो भी मल्टी बैगर. ये 2 तरीके हैं. क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस, गिव इट इनफ टाइम. अब इसकी अगर आपको डिटेल में जाना है तो कुछ चीजें आप 16 अक्टूबर तक इंतजार करें. इसमें एक और चीज है जो ह्यूमन बिहेवियर कंपोनेंट आता है. ये जो रेसिपी मैंने आपको बनाई ना, हर कुक का एक स्पेशल होता है ना. वो थोड़ा बताएगा कि यार उसने तेरे को बता दिया कि यार इतना चावल है, खिचड़ी बनानी है प्यारी सी, जिसमें मेरी नानी जी बनाती थी, इतना घी डाल दो, इतना वो डाल दो, थोड़ी देर गर्म करो. बट एक स्पेशल चीज तो भाई नानी जी की है, तुम्हें भी नहीं मालूम. एकदम. वो स्पेशल चीज क्या है? अगर कोई मुझे बता दे अभी तो बहुत अच्छा, नहीं तो 16 अक्टूबर को आपको बताऊंगा. विच इज द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टिंग. वो हैंडल करना बहुत जरूरी होता है. भैया मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. 16 फोटोग्राफ देख लो, समझ में आ जाएगा क्या है रेसिपी ऑफ मल्टी बैगर्स. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. that answers my questions in part, and I am very excited to
गेट द फुल आंसर, वो क्या है जिसमें असली स्वाद आता है नानी जी का, वो 16 अक्टूबर को सुनेंगे। और जी दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। 16 अक्टूबर को 2 दिन 16 और 17 हम टेक्नो फंडा समिट करने वाले हैं, और इसमें 15 दिग्गज होंगे, 15 एक्सपर्ट्स, जिसमें से 3 आज आपके साथ हैं, सॉरी 4 आज आपके साथ हैं, और उसके अलावा 11 और एक्सपर्ट्स, और इन सब की जो रेसिपीज हैं उन हम आज वो चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हम बहुत एक्साइटेड है, बहुत जबरदस्त होने पारी है। और जो नाम है टेक्नो फंडा, मतलब टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को मिला के मार्केट को आगे समझना। तो भैया मैं आपके पास वापस से आऊंगा, एक बार मैं वापस से निखिल, तो मैं स्क्रीन पे आपके साथ साथ अब लोगों को लेता हूं, एक एक करके हम जोड़ते हैं, और हम एक 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 चर्चा करते हैं। ठीक है, इस चर्चा में मेरा एक क्वेश्चन है, उसमें आप लोग मल्टीपल लोग उस पर अपना टेक दे सकते हैं कि ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, आपने भी कहा कि रीजनेबल वैल्यू पे गुड क्वालिटी, okay, so when the markets are so heated up, so much of uh, there are assets which are chased by so much of easy money in the market, right? So is it possible to identify value stocks, available at a reasonable value, good stocks, quality stocks which are good franchisee? Because see, if those are available, people have identified, money has chased, and the prices must have gone up, right? So is it really possible to identify such companies, and if yes, what are the 1 or 2 points which are clear indicator of such franchisee which can become monopoly, which can capture a huge market share, right, of that particular industry? So my question is to all of you. So whoever wants to take go first can show his hand. So yeah, sir, with you, please. See, earlier you asked me about which sector you are going to be focus on, right? Yeah. See, there are two, three sectors which I am very bullish on that. My topic is on canceling, Yes. right? So in canceling, there is one criteria which we can consider is the group rank, industry group rank. So there are 197 industry group ranks in canceling methodology, which O'Neill followed, and we also get in the in all that canceling kind of thing. So now there are sectors which are very bullish is aerospace and the defense, but there are 12 stocks in that sector. That is now currently it is about the group rank of 7, and there is retail, consumer durables and retail segment. Retail means retail outlets like Trent and other DMart, these kind of things, retail segment. Then there are consumer durables segment. These consumer durables, these three sectors are going to be little outperform the other sectors. There are few stocks in the each sector, maybe 10, 12 stocks in the aerospace and defense stocks. See, our basic thing is choose the best industry, and choose the within that industry, choose the leaders in the industry. This is the character of the canceling investing, right? So first you concentrate on the what are the leading industries currently is in the market. So these are the three segments, and identify the three leading stocks in the sector, each sector one, and invest in them. That's all. And there is another criteria which is also canceling defends that earnings growth. First thing anywhere. So you said value, but what canceling look at is the growth stocks, right? What is the growth they are achieving it? Whether their earnings are moving forward by 20% annum or quarter on quarter growth, and their ROEs must be about 17% on return on equity. That's what return on equity. These are the parameters, fundamental factor parameters we look at in the identifying the leading stocks in the leading industry. That's a criteria of investing in the thing. Okay. So, sir, since you touched upon growth investing, all right. So, I wanted to stay a little on the value investing side, but we'll quickly come to your side, growth investing. I'm a little scared of that, especially CanSlim, right? When we talk about Techno-Funda, and when I say I represent a lot of basic janta, aam janta, right? So, my question is, using CanSlim strategies in the fast moving markets,
we identify using technicals and fundamentals, we identify the growth stocks. But when there is slight downturn, like what we saw in last 1 week or so, right, and maybe in the sector or particular stock, they get bitten down. These growth stocks, which has been running high beta stocks, you can call them or whatever, they get bitten down more than any other stock or any other sector. So how to safeguard ourselves from such picks, especially from canceling strategies, sir? If you can answer that. Yeah, there are sell rules also in that. Every strategy is there are sell rules, right? When your stock declined 8% from your purchase price is exit. That's the first rule. Your losses should not go behind 8% of the stock in any Okay. stock, any quality stock or a weaker stock. That's a benchmark for a sell, right? And Yep. never buy a stock below 50 DMA. That's a technical factor, Okay. right? Okay. At the same time, whenever you get a 25% return after your entry, book some partial profits. Okay. Okay. Got it, sir. Got Okay, it. And for most so of the retail investors like us, the challenge is we only know entry. We don't think yes, about exit. All all right. are We don't oblivious. exit. So thanks to you for giving some hints on exit strategies. And I'm sure your presentation on CanSlim strategy on 16th and 17th, your day, will be very, very insightful. And we are eagerly Yes, waiting for that, sir. thank So, you. yeah, I'll quickly move to Karan. All right. My friend Karan has been an advocate of, a very interesting strategy, which is cloning. Right, Karan? I have been hearing this from Karan from quite some time now, years in fact. So, cloning strategy, right, Karan? Uh, I have seen, and when I say I, Aam Janta, we have seen, बस आज राधा कृष्णन दमानी जी ने ये स्टॉक में लगाया, आज फलाने ने लगाया, इसने लगाया। जब मैं लगाता हूँ, मेरा पैसा नहीं बनता, उनका बहुत पैसा बनता है, राइट? तो ये कैसे होता है? मतलब मेरा कभी भी नहीं बनता, उनका हमेशा बनता है, तभी वो वहां पहुंचे हैं। ये ख्याल आते हैं मन में, फिर लगता है यार ये क्लोनिंग व्लोनिंग रहने दो, या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो करण, क्विकली व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारा पैसा रिटेल इन्वेस्टर का पैसा नहीं बन सकता? क्या लगता है आपको? नहीं, आई थिंक आप खुद ही बोल रहे हैं कि उनका तो बनता है और उन्होंने भी स्टॉक खरीद के ही बनाया नहीं, तो आई थिंक वो जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं हम उस टेक्निक को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अगर उनका पैसा नहीं बनता तो मैं मानता कि चीज़ गलत है, बट अगर सारे बड़े इन्वेस्टर पैसा बना रहे हैं और स्टॉक खरीद के ही बना रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर नहीं बना पा रहा है सेम चीज़ यूज़ करके भी, तो आई थिंक कहीं ना कहीं फ्लॉ इज इन द मेथड दैट यू फॉलो, इन द प्रोसेस दैट वी फॉलो। जो मेरा आइडिया रहेगा उस दिन की, आई कैन गिव अ गुड प्रोसेस, बिकॉज मैं तो इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दिस एज। तो मेरा वही ट्राई रहेगा कि वो एक प्रोसेस लोगों को समझा सके जिससे कि चीज़ों में क्लैरिटी हो जाए, एंड क्या नहीं करना है वो बताएंगे बेटर, क्या करना है वो तो सबको आइडिया है, क्या नहीं करना चाहिए आई थिंक आई ट्राई टू पुट इन। So, Karan, I have seen your presentation on cloning strategy, and I am a big fan of yours, let me tell you. And I personally believe that cloning strategy do work. It is working for you. I have seen the results, and if followed the way you advocate, it's definitely going to work. And 16th and 17th again, I am excited because can slim ho, yeah, cloning ho, we'll learn a lot of new things. And the presentations, I've seen the presentations are full of insights. So I'm very excited for this day. And to the audience who's watching, let me tell you, this is a part of exclusive to StockEdge Club users. So we have this club, a club of exclusive club of 8,000 people so far, who are part of this club for 1 year, and they get access to stockage premium, they get access to learning, they get access to monthly events which we do, and we'll do a lot of physical events. So this is going to be next level of collaboration and learning from each other and learning from experts. And this is available exclusively to stockage club members. So friends who want to attend this Techno-Funda Summit on 16th and 17th, they just need to become stockage club members. And trust me,
this event in itself is worth the money which we charge for StockEdge Club, but you get much more for 1 year, and this is going to change you as an investor and as a trader, friends. So I personally invite you to become members of StockEdge Club, and we will have a lot of learning together. But this is not the end. I will again have take from Ajay Bhaiya. So I want to understand from you, a closing, this will also be a closing remark for today's session. All right. So people who are at my age, there's a great population which is from the age of 30 to 40, Yeah. making decent money, right? And probably this kind of money the last generation might have seen from a different perspective. So what I see is lot of family businesses, etc., are facing trouble, facing problem because of the formalization of the economy, right? And the wealth is going towards these large corporates, right? Which the politicians always keep referring to Adani, Ambani. Okay. So what I see is a lot of small businesses getting shut, getting closed down, and the money flowing into proper formal channels. How do we benefit out of this change which is happening in our country? Right? This is my question to you, sir, and this will also be a great learning for all of us. With that, we will come to an end. This will be the last question. So Vineet, your question is how do we as investors benefit from formalization of the Indian economy? Is Absolutely. that कि हम जो निवेशक Absolutely. हैं, आम निवेशक हैं, वो छोटी कंपनियां जो अपने धंधे से बाहर जा रही हैं और जो बड़ी कंपनियों की तरफ कंसोलिडेशन हो रहा है, उससे हम एज इन्वेस्टर्स कैसे बेनिफिट करें, यही है ना सवाल? हाँ, और आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर सबसे पहले will be the first one to get big advantage of that? If you have something in mind, so you can think about it and tell us. नहीं, सो इसमें क्या है कि देखो, इन सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई गिव यू अ फ्रेमवर्क. आई डोंट नो व्हिच सेक्टर्स, ठीक है? फ्रेमवर्क Yes. बहुत सिंपल है. अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सेक्टर, अगर 100 रुपए की टोटल रेवेन्यू है सेक्टर की, उसमें कितना ऑर्गेनाइज्ड है और कितना अनऑर्गेनाइज्ड है. अगर बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं और 2 ही 3 प्लेयर हैं उस सेक्टर में, सो लेट्स अज्यूम द सेक्टर इज वर्थ 100 रुपया, उसमें 25 रुपये ऑर्गेनाइज्ड है, 75 अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है? उस 25 में अगर 5 प्लेयर हैं जिनका मार्केट 5, 10, 15 इस तरह है, तो आपको वो पांचों प्लेयर खरीद लेने चाहिए. उसमें आप रैंकिंग वैंकिंग कुछ ना करें, ठीक है? फिलोसॉफिकली, बिकॉज पहला कि 25 का, पहले 100 रुपए का बाजार अगले 20 साल में 400 हो जाएगा, और ये जो 25 है मार्केट शेयर गेन करके 200-300 पहुंच जाए. Perfect. तो पहले आप सेक्टर क्लासिफिकेशन वैसे करें, ठीक है? जो इंडस्ट्री ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें क्या होगा कि अगर छोटे प्लेयर अगर बाजार से बाहर जाते हैं, बड़े प्लेयर को प्राइसिंग पावर ज़्यादा आता है, क्योंकि छोटे प्लेयर का क्या था, आर्बिट्राज क्या था आज तक? जीएसटी से पहले सिर्फ टैक्स. आज मेरे भाई बहन हैं या मेरे दोस्त हैं कलकत्ते में जो छोटे बिजनेसेस चलाते थे, उनका आर्बिट्राज क्या था? टैक्स था. Exactly. जीएसटी ने वो आर्बिट्राज, उनकी मार्जिन ही टैक्स थी, ठीक है? इसलिए वो भाव के नीचे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह की टैक्सेस का नेट बढ़ता जा रहा है सर. तो हाँ, तो अगर मैं साबुन बना रहा हूँ, ऑर्गेनाइज प्लेयर 100 रुपए में बेच रहा हूँ और 20 रुपया मेरा टैक्स है एज एन ऑर्गेनाइज प्लेयर. अगर मैं अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं तो 70 रुपए में बेच रहा हूँ क्योंकि मैं टैक्स बचा रहा हूँ. व्हेन आई गो आउट ऑफ द मार्केट, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की प्राइसिंग पावर बढ़नी शुरू हो जाती है. तो फिर आप वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें जहां प्राइसिंग पावर इंप्रूव हो. ये 2 ट्रेंड ही आपको दिखेंगे, और ये टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादा दिखेगा आपको, ब्रांड्स में कम दिखेगा. I hope that answers your question. Sectors आपको that दिखा. answers my question, and the framework is very solid, I think, right? Because I can identify a lot of companies where there are very limited formal players, lot of informal players, Correct. and this formalization will help these 2-3 players, and there I need not be very choosy and I can pick up stocks. Don't. Right? क्योंकि देखो Awesome. क्या है कि I'll just finish with one note. स्टॉक सिलेक्शन आप तब करते हो जब इंडस्ट्री स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया है, ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है. जब इंडस्ट्री एस कर्व में यहाँ पर है और इतना लंबा ग्रोथ है और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? शुरू में पांचों खरीद लेने चाहिए, बास्केट बनाना चाहिए. अगले 5 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन शाहरुख खान है और कौन चिंकी पांडे और कौन रोनित रॉय.
एग्जाम्पल, तब फिर आप Got it. टॉप 2 को रखो और 3 को बेच दो। परफेक्ट, परफेक्ट। बहुत ही जबरदस्त टेक अवे है सर आपसे। और क्विकली मैं आता हूं निखिल पे। निखिल, इन 2 लाइंस लेट्स समराइज, इन सॉरी, इन 1 or 2 minutes लेट्स समराइज, एंड आप है ना अपना क्लोजिंग रिमार्क 2 मिनट में कि एज अ इन्वेस्टर क्या करें। आपसे कुछ लेके जाना है मेरे को, 2 मिनट में बताएं क्या करना चाहिए हमें। ओके, पहले तो मैं पिछला वाला क्वेश्चन आपका कवर करता हूँ कि आर देयर वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ और नॉट. I think there are always value investing opportunities. Even in the peaks of bull market, even in the 2021 also, if you saw, there were stocks which were at very very great valuations like PSUs. अगर आज भी हम देखें तो there are companies like pharmaceuticals which has not given run from last 6-7 years. So the approach that I follow is, I think I would say it's opposite to what Brahmachari sir explained. I go for the sectors first of all that has not gone run for 6, 7, 8 years. You look at telecom companies, you look at constructions, you look at EPC businesses, you look at pharmacy, pharma companies, and you can go for all other companies which I have not given run for 6, 7 years. And then you go for top 3 companies. Now, what are those top 3 companies? Is it market share? Is it based on market cap? Is it based on growth? What is it? So I go, I have a ranking system in which I go for 3 parameters: 3-year sales growth, 3-year ROCE, and PYB ratio. So all on those basis, I rank the stocks in the particular sectors. And how do I do that? I will explain in our summit. And on those basis, I find out 3 companies at the top, and I try to invest them at the margin of safety. So I think these 6-7 sectors should do very well, and great margin of safety is there in these sectors. And yeah, thank you. Awesome, Nikhil. Thank you so much for sharing your thoughts. And in markets, the best thing is there is your truth, there is my truth, right? And everyone is right. Okay, so value investing works, growth investing works. So for that, we will come to Sir, Mr. Brahmachari. Sir, in 2 minutes, please give your closing remarks. Can you repeat the question for me, please? So there is no question, sir. We want to hear your thoughts on, as a retail investors, right? Yeah. Some interesting thoughts from you, which we should take back home and ponder upon, right? Yeah. So that's the question, sir. See, in any market conditions, there are opportunities in the market, because even when the market declines about 4 to 5% in a day, also you'll get some stocks will rise, right? And when the market is rising, also there are some stocks will fall. So don't look at the falls and declines and the advances, but look at the which stock you are holding and which stock you are pick, which is your best stock to pick in the market. See, when you are interviewing a person to take for a job, what we look at, he should perform to us and he should give us some return on what we have given to his, right? So interview a price chart, will it perform for you? That's a basic question for you. So whether your entry is right, if your entry is right, will it give you a return to you? If at all not, what is your risk level? These are the 2 characters you should always look into the markets and then take a decision whether it meets your risk reward ratios, or whether the stock will perform the other than the other stocks listed in the markets. Because you have selected out of 6,000 stocks listed, you have selected maximum 10 to 15 stocks, right, in your portfolio. Yep. So those 10 to 15 stocks will perform for you or not? That's a question here. Where the canceling outlays the plan for that is relative strength, whether their relative strength is higher or when compared to other listed stocks. That's a benchmark to you invest in the market in the via canceling basis. So you should look at the relative performance of the stocks, whether the price is making high, relative strength is not making high. That means there is something lagging in the market than in the stock, right? So when the stock's relative strength is a new high, and along with the price, that's where we enter. So that means you are entering at the high and you are selling at the higher levels.
So buy high and sell higher, not buy low and buy high, sell high. So that's the strategy you should follow. And where we can have always an edge, you definitely outperform the benchmarks and the broader market indices like Nifty 500. Take your benchmark as a Nifty 500, and your aim is to outperform that index. So definitely that canceling methodology will give you that outperformance, and if you follow certain rules, and those certain rules will discuss, and we will simplify the methodology, because everyone feels that canceling is little a bit to understand, hard to understand. No, it is very simple strategy, and you will perform. But because what we are doing now is all the intraday charts, all the 3 minute, 5 minute charts, while looking at the 2 minute, 3 minute charts, no, it doesn't give you any long term view. So you stick to your only weekly charts and find the basis, find the weekly basis to break out and take a decision. That's all. Very Awesome. simple to understand and very simple to perform well in the market. Sir, you are really championing the costs of Techno-Funda, and we are sure, I'm sure a lot of people will get influenced to learn technicals who are thinking. So the first thing I'll do is go and study a little bit of RSI and Yes. understand your session a little better. That one moment. See, Yeah. in India, I'm the one of the few persons in the early stage, because Market Smith India came into India in 2012 only, right? Before Yeah. that, there is no cancel methodology in India. There are very few people like Ramesh Damania and someone Singh is following that methodology. When I Hmm. visited that office in Bangalore, they Hmm. surprised me looking at me. See, we are hardly fine, because it requires very patient, because when you're talking about the weekly charts, the intraday traders will definitely, there is one simple rule in technology, I'll tell you. Higher the time frame, higher the accuracy. Simple rule is the best rule is that. That's all. There is no ifs and buts. Higher the time frame, higher the accuracy. So, sir, good. We don't have any intraday traders here, so no one to challenge you. So, thank you so much for your time. We'll come to Karan. Karan, quickly, couple of minutes. Let's, what's your thoughts as an investor, right? Who is trying to invest in Indian markets? What's your thoughts? What should I do? What should I look at? Quickly, 1 or 2 minutes. Let's wrap it up. सो इंडेक्स छोड़ के आई गेस बेटर है कि आप सेक्टर्स देखना स्टार्ट कर दो. बहुत बार क्या होता है कि हम इंडेक्स को देख के एक ओपिनियन बना लेते हैं. किस सेक्टर में फ्लो जा रहा है, कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, किन सेक्टर्स ने अभी अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज फ्लोज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फ्लोज गायब नहीं हो जाते. तो आई थिंक अगर ये प्रोसेस इन्वेस्टर्स फॉलो करेंगे, दे विल वन हैव लेस कंफ्यूजन, बिकॉज इंडेक्स कंफ्यूज करता है, और क्लैरिटी इंप्रूव हो जाएगी, और पता रहेगा कि स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है. तो आई थिंक इट विल बी मच मोर प्रॉफिटेबल फॉर देम. सो आई थिंक दिस. Thank you, Karan. That was very brief and very powerful. We should all start looking at sector rotation, how the money is flowing from one sector to the other. So that's very powerful. We'll go back, we'll do our homework, we'll come back on 16th and 17th to attend Techno-Funda Summit and learn from all of you. And I'm very, very excited. And for that, to share it with my audience, what I've done is I put in the description, the link and a coupon code which is valid for a very limited period of time, so that I can facilitate more and more people to join StockEdge Club. And I personally feel, not because I'm part of this, I personally feel this is going to change the way people invest in Indian markets. So, friends, I invite all of you on in Techno-Funda Summit, which is going to happen in 16th and 17th. 15 experts, including your favorite Mr. Vivek Bajaj, and the other 15 you will see over there. So, with that, thank you, gentlemen, all of you, for your precious time. And you have been very, very candid in sharing your thoughts and answering my questions. Thank you so much once again. Thank you, Mr. Ajay Sharma, Mr. Nikhil Gangil, Mr. Thoviti Brahmachari, and Mr. Karan Sharma. So good to talk to you. We are finishing Thank you. dot in 1 hour. Thank you. Thank you Same so here. much. Thank Thank you. you. Thank you very much. Good Thank you night. very much. Good night. Thank you. Thanks. Bye bye.